Hello, my dear students. You can never cross the ocean unless you have a great courage to lose the sight of the shore. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करेंगे फंक्शन रिलेटेड टॉपिक का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटिटी एंड दैट इज व्हाट कॉलिंग कन्वेंशन। As I mentioned in the previous session also, it is very vital, important for each and every interview. And इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड कॉलिंग कन्वेंशन का, and that is call by reference. I'll request you to see the session for call by values and तब जाके इस सेशन को आप बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाओगे, बिकॉज वहां पे कुछ ड्रॉबैक्स हम लोगों ने देखे थे कॉल बाय वैल्यूज के, एंड उन ड्रॉबैक्स के ऊपर रिमेडी देगा ये कॉल बाय रेफरेंस, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट what call by reference is, how the process can happen, and we are going to work on the same code, that is swapping of two numbers का application. So let's move into the coding to check out what is call by reference, उसमें क्या चीजें यूज करने हैं, and then pictorially clear करेंगे, and finally we are going to conclude what call by reference statements are that you're supposed to speak out in your interviews and viva. So as usual, back into the Turbo C, and here we'll go with opening of form.c and we'll save it as demo24.c, right? Okay, and what we are going to do is यहाँ पे I'll be just declaring two variables. Let's see, integer a is equal to 5 and b is equal to 6, and we'll go with printf, and here I'll go with before swap a is equal to %d and b is equal to %d, right? And we'll replace it by a and b. %d will get replaced by a and b, right? Okay, so we'll go on printing one more time, but this is after swapping. The value of a is %d and value of b is what? %d, and this %d should get replaced with a and b. यहाँ पे सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे, कंपाइलर इज हैप्पी, एंड रन करने के बाद हाँ, बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी के वैल्यूज सेम दिख रहे हैं, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने स्वैपिंग अटेम्प्ट नहीं किया है, राइट? ओके, एंड देन व्हाट विल डू इज in between this we are going to work on a call to the swap function, right? Okay, and यहाँ पे पास करेंगे a as well as b, right? Now in this process, if we go with looking into the call, can we identify how we can go on declaring the function? Definitely yes. यहाँ पे name of the function is given to us, that is what swap, and there are two parameters that are passed to the function, and those parameters are of what type? Integer type. So name of the function is swap. It takes two parameters of type integer, and as इससे रिटर्न किया गया वैल्यू किसी चीज को असाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग सम वैल्यूज रिटर्न फ्रॉम द स्वैप फंक्शन, तो इसका रिटर्न टाइप होगा व्हाट? वॉइड, राइट? सो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एंड हियर आई गो विद वॉइड स्वैप, हियर गो विद इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, राइट? ओके, एंड फिर यहाँ पे what we'll do is swap को define करेंगे, and declaration as it is integer x comma integer y, and यहाँ पे we'll go with what? Integer temp. This is the same code that I'm writing that we have already seen with respect to call by value, right? Okay, and then temp is equal to what? x का वैल्यू प्रिजर्व करेंगे temp में, then x can be changed with y value, and then y can be changed with temp value, right? यहाँ पे और एक बार यहाँ पे प्रिंट करके चेक करेंगे, in swap function, in swap function x is equal to %d and y is equal to what? %d, and %d will get replaced with x and y, right? Okay, so let's save the code, ask it to the compiler. Compiler is happy, and let's run the code. And we have seen like
दिस को ऑलरेडी कॉल बाय वैल्यूज के साथ, राइट, कि यहाँ पे ए एंड बी में वैल्यूज आर 5 एंड 6, स्वैप फंक्शन में तो वो स्वैप हुए 6 एंड 5, बट स्टिल दे आर इंटैक्ट इन व्हाट, ए एज वेल एज बी में वही वैल्यूज हम लोग देख पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हो पा रहा है, and why this swapping is not happening from the previous reference, can you please let me know those two statements? Yes, in call by values, values of actual parameter are copied into formal parameters, as formal parameter are different variable in different memory location in different scope, changes done with them are not reflected into actual parameters। ये हम लोगों ने देखा कॉल बाय वैल्यू, राइट। अभी इस ड्रॉबैक के ऊपर काम कैसे करना है, ए एंड बी को स्वैप कैसे करना है, तो वी नो दैट वी शुड गो विथ व्हाट, कॉल बाय रेफरेंस। तो अभी कॉल बाय रेफरेंस के लिए व्हाट डू वी नीड? सो फर्स्ट चेंज दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर, बहुत ध्यान से देखना है, इंस्टेड ऑफ पासिंग द values of actual parameter, I am going to pass what, addresses of actual parameter। Observe this। तो ए एंड बी के वैल्यूज को पास करने की जगह पे अभी मैं पास कर रहा हूं उनके एड्रेसेस, राइट। एंड वंस आई एम एबल टू पास द एड्रेसेस, डेफिनेटली इसको अगर हम लोग सेव करते हैं, कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, तो कंपाइलर इज डेफिनेटली गोइंग टू शाउट ऑन यू, प्लीज ऑब्जर्व, राइट। कंपाइलर इज नॉट हैप्पी बिकॉज इट सेज दैट टाइम मिसमैच। आप यहां से पास कर रहे हो एड्रेस ऑफ ए एंड इसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो किसमें, एक्स में, जो कि सिर्फ इंटीजर टाइप का है। इट इज नॉट एबल टू होल्ड द एड्रेसेस, इट इज एबल टू होल्ड ओनली व्हाट, इंटीजर वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे ए का एड्रेस इसमें नहीं आ सकता, एज वेल एज बी का एड्रेस इसमें नहीं आ सकता। एंड फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन अबाउट बेसिक्स ऑफ पॉइंटर, व्हाट वी नो, यस, अगर एड्रेसेस को होल्ड करना है तो वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, एंड दोज वेरिएबल्स आर व्हाट, पॉइंटर्स, राइट। तो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये एक्स अपना नॉर्मल इंटीजर नहीं रहेगा, दिस विल वर्क एज व्हाट, पॉइंटर वेरिएबल। रीडिंग कैसे करेंगे, x is a variable of type integer pointer capable of holding address of another integer variable, so address of a इसमें आ चुका है x में, and definitely if we want to hold address of b, इसको भी किस नोटेशन में डिक्लेयर करना पड़ेगा, पॉइंटर के नोटेशन में, राइट, ओके। एंड देन सिंपली विल गो ऑन यूजिंग वैल्यू एट ऑपरेटर। कैसे यूज करना है, प्लीज सी, वैल्यू एट x and then we'll go with value at x and यहाँ पे, right, and I'm going to explain those all entities, please observe with the pictorial pattern so that the things will be 100% crystal clear, right, okay। So let me make the necessary changes। तो जहां जहां पे x and y था वहां पे मैंने उसको पॉइंटर के रूप में यूज कर लिया, राइट, ओके। एंड नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग। यहाँ पे it says that extra parameters, let me check what is happening। हाँ, हम लोगों को डिक्लेरेशन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट, ओके, यस। सो इट्स नॉट ओनली द चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डेफिनेशन। सो डिक्लेरेशन में भी चेंज किए, सेव किया, एंड नाउ लेट्स आस्क इट टू द कंपाइलर। कंपाइलर इज हैप्पी विद दिस, राइट, ओके। एंड अभी रन करके चेक करते हैं कि आर वी गेटिंग द डिजायर रिजल्ट्स और नॉट। So now please observe here, initially the values are a is 5, b is 6, right। स्वैप फंक्शन में तो वो स्वैप हुए ही, एंड उसके अलावा वो अभी मेन फंक्शन में जाके भी क्या हुए, स्वैप हुए, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो ऐसा कॉल बाय रेफरेंस ने क्या किया, जहां पे एड्रेसेस हम लोग ट्रांसफर किए, वहां पे पॉइंटर्स में होल्ड किए, तो वो कैसे काम कर रहे थे, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे, तब जाके ये 100% क्रिस्टल क्लियर होगा। सो लेट्स ट्राई टू सी लाइक हाउ दिस ब्यूटीफुल कॉल बाय रेफरेंस कन्वेंशन वर्क्स with respect to pictorial representation of this। So what are the different changes that we have done when we switch from call by values into call by reference, उसको पिक्टोरियली ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने
मेन के अंदर what we have done is दो variables of integer type a is equal to 5 comma b is equal to 6 and then we use a swap function and इस swap function में instead of passing the a and b के values this time we pass what address of a and address of b, right? Okay, this was our main function and अभी swap function में क्या क्या changes हुआ है? So we have done it like void swap and यहाँ पे integer star x comma integer star y, right? Okay, so x is a variable of type integer pointer, y is a variable of type integer pointer capable of holding address of another integer variables into it, right? Okay, and then we have seen like यहाँ पे एक temporary variable लिया integer type का and then we have seen like how this works as temp is equal to value at x, then value at x will be replaced by value at y and then value at y will be replaced by temp का value, right? Okay, हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं but let's go with the genuine basics as when any function is called, control is transferred from calling function into what? Called function. After execution of the called function, control goes back into what? Calling function. And we know that this is calling function and this is what? Called function. Right. Now, one more aspect that we have seen already, that is, these are actual parameters and these are our formal parameters, right? Okay, and in this case, what we have done is, क्या पास हुआ है अभी, ये मेन चेंज है, राइट? पिछले बार यहां पे लिखा था वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स, अभी यहां पे एड्रेसेस, right? So first difference you could be able to observe over here is addresses of actual parameter are copied into formal parameter and as formal parameters has to hold the addresses, they are working as a pointers, right? Okay, तो ये basic aspect है and अभी देखते हैं changes क्यों हो रहे हैं, right? So so now let us try to make it more clear with the pictorial approach that अपने पास एक वेरिएबल है a जिसका वैल्यू मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ 5, राइट? ओके, एंड अपने पास दूसरा वेरिएबल है b जिसका वैल्यू मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ व्हाट 6 एंड बॉक्स के बाहर उसके एड्रेसेस में लिख रहा हूँ 100 एज वेल एज व्हाट 200, एज्यूम, राइट? सो बॉक्स के अंदर उसका वैल्यू है, बॉक्स के बाहर उसका एड्रेस है, सो दिस इज बॉक्स के अंदर वैल्यू and box के बाहर what address, right? Okay, now whenever we are passing the addresses, तो address of A अगर मैं कहता हूं तो आप 100 कहना चाहिए, address of B अगर मैं कहता हूं तो आप 200 कहना चाहिए, right? This we have seen with respect to the basics of pointer, right? जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम लेंगे तो आपको देखना है बॉक्स के अंदर एंड जब भी हम लोग एड्रेस के बारे में बात करेंगे तो आपको देखना है बॉक्स के बाहर, दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट एस्पेक्ट, विजिबल एस्पेक्ट्स है उसके साथ ही काम करेंगे तो बहुत इजी आपको ये पता चलेगा, राइट? ओके, अभी यहाँ पे x इस वेरिएबल में क्या होल्ड कर रहे हैं? एड्रेस ऑफ a, सो व्हाट इज एड्रेस ऑफ a? तो x के अंदर आ गया मेरे लिए व्हाट 100, सो y के अंदर क्या आ चुका है? y के अंदर एड्रेस ऑफ b, सो y के अंदर है व्हाट 200 एंड देन वी हैव टेम्प नाम का एक वेरिएबल जो कि होल्ड कर रहा है इनिशियली गार्बेज वैल्यू, राइट? एज दीज आर आल्सो वेरिएबल दे मस्ट बी हैविंग सम अदर एड्रेसेस, सो लेट अस से 300 एड्रेस इसका है, इसका 400 एड्रेस है, इसका 500, तो बॉक्स के बाहर मैंने रखे एड्रेसेस एंड बॉक्स के अंदर मैंने रखा वैल्यू एंड बॉटम लाइन इज जब भी मैं वेरिएबल का नाम लूंगा आपको बॉक्स के अंदर देखना है एंड जब मैं एड्रेस कहूंगा तो आपको बॉक्स के बाहर देखना है। इतना इजी एस्पेक्ट्स के साथ इसको क्लियर करेंगे, राइट? ओके, तो अभी व्हाट इज इन एक्स, आई एम टेकिंग द वेरिएबल नेम सो यू नीड टू सी इन द बॉक्स, सो व्हाट इज इन एक्स, एक्स के अंदर 100 है,
value at x, so value at 100 is what 5, right? तो ये जाके मूव हो रहा है किसमें, टेम्प में, सो टेम्प में आ गया 5, राइट? व्हाट इज इन y, y में है 200, वैल्यू एट 200, वैल्यू एट 200 इज 6, इस 6 को असाइन करना है कहां पे, व्हाट इज इन x, x में क्या है 100, 100 का वैल्यू 5, 100 का वैल्यू जहां पे है वहां पे ये 6 को असाइन करना है, सो 5 की जगह पे आएगा यहाँ पे व्हाट 6, एंड ये हुए चेंजेस इनटू व्हाट एक्चुअल पैरामीटर। अभी व्हाट इज इन टेम्प, टेम्प के अंदर क्या है 5, राइट? एंड 5 असाइन करना है कहां पे, y के अंदर क्या है, y इज होल्डिंग 200, 200 का वैल्यू, 200 का वैल्यू इज 6, जहां पे 6 है वहां पे टेम्प का वैल्यू को राइट करना है, एंड यहाँ पे आया व्हाट 5, एंड तब जाके चेंजेस हुए अपने कौन से पैरामीटर में, एक्चुअल पैरामीटर्स, and that's the beauty of what call by references. So let me conclude it with the help of two statements. In call by reference, addresses of actual parameter are copied into formal parameters which are working as a pointers. Second statement is, as formal parameters are pointers, changes done with them are reflected in actual parameters. Repeat करते हैं. In call by reference, addresses of actual parameter are copied into formal parameters which are working like a pointer, right? And as they are pointers, changes done with them are reflected into what actual parameters. So I hope that this beautiful concept of making the changes into the actual argument is very clear to you all. But उसके लिए हमको चाहिए all the basics of pointers, and pointers की वजह से ही ये possible हुआ. This is a very beautiful concept, and यहाँ पे आप देख पाओगे कि रिटर्न टाइप void होते हुए भी इस फंक्शन ने दो वैल्यूज को चेंज कर लिया, राइट? जो कि एक्चुअल पैरामीटर्स में थे, right? So this is the beauty which is only possible because of call by reference, and जहां पे हम लोग यूज कर पाते हैं pointers. So इस सेशन में इतना ही रखते हैं. I hope कि कॉल बाय रेफरेंस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर. जरूर ये कोड आपके मशीन के ऊपर करके देखना है, तब जाके बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. Keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning, and thank you very much.